Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. In this channel we start the speaking course, English speaking course, and we learn about speaking English. Today's our topic is sound of alphabets. Okay. In this lecture we learn sound of alphabets and sound of vowels. Okay. So let's start the sound of A. The sound of A is a, and the sound of B is b, b, and the sound of C is s, k, s, k, and the sound of D is d, 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 and the sound of E is a, e, a. Sound of F is f, 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 and the sound of G is g, g, j, j. Sound of H is h, h. Sound of I is I. Sound of J is j, j. Sound of K is k, k. Sound of L is l, l. Sound of M is m, m. Sound of N is n, n. Sound of O is o, o, o. Sound of P is p, p. Sound of Q is k, q, k, q. Sound of R is r, r. Sound of S is s, s. Sound of T is t, 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 t. Sound of U is u, I. Sound of V is v, v. Sound of W is v, v. Sound of X is x, x. Sound of Y is y, a. Sound of Z is z, z, z. Sound of Z is z, z. So now let's start the learn sound of vowels. तो स्टूडेंट्स हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं. ओके, तो 5 जो हैं वॉवेल्स हैं और अदर 21 जो हैं वो हैं कंसोनेंट्स. तो ये बात आपने याद रखनी है. और दूसरी बात ये कि जो हमारे पास वॉवेल्स होते हैं इनके बिना कोई भी लफ्ज़ मुकम्मल नहीं होता, यानी कि हर लफ्ज़ में वॉवेल मौजूद होता है. समटाइम्स क्या होता है कि वाई इसकी जगह ले लेता है, कि जैसे माय में वाई आ रहा है, इस खाए, ठीक है, इसमें वॉवेल नहीं आ रहा है. अदरवाइज़ आप कोई भी लफ्ज़ अपने दिमाग में लेके आएँ तो आप मुझे भी कमेंट करके बताना कि क्या कोई लफ्ज़ ऐसा है जिसमें वॉवेल्स ना आता हो या फिर वाई ना आता हो. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ए का साउंड. तो ए अगर हमारे पास शुरू में आए तो वो आ या ए की आवाज़ निकालता है. जैसे एंट, एंट, आम, आम, आर्क, 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 आर्क. अब इसी तरीके से ए अगर हमारे पास दरमियान में आए तो वो ए की आवाज़ निकालता है. जैसे पेन, पेन, फैन, फैन, टैप, टैप. और अगर ए हमारे पास आखिरी में आए तो वह अ की आवाज़ निकलती है. जैसे एरा, एरा, सागा, सागा, टाटा, टाटा, एरा, सागा, टाटा. तो अब बारी आती है ई की. ई अगर हमारे पास शुरू में आए तो वो आ की आवाज़ निकलता है. जैसे एग, एग, एंड, एक्स, एक्स. ई को खींचना है थोड़ा, एक्स. ठीक है, ई अगर हमारे पास दरमियान में आए तो ये की आवाज़ निकालेगा. बेड, बेड, पेन, पेन, नेट, नेट.
और इसी तरीके से ई अगर हमारे पास आखिरी में आए तो वो ई की आवाज़ निकालेगा, जैसे शी, ही, बी। अब बारी आती है आई की। तो आई अगर हमारे पास शुरू में आए तो वो आई की ही आवाज़ निकालेगा, जैसे आई, आयरन, आइस। आई अगर हमारे पास दरमियान में आए तो वो ज़ेर की आवाज़ निकालेगा, जैसे जिप, टिन, निब। और आई अगर हमारे पास आखिरी में आए तो वो आई की ही आवाज़ निकालेगा, जैसे सफारी, छेले, स्खे। तो अब बारी आती है ओ की। तो ओ अगर हमारे पास शुरू में आए तो वो आ की आवाज़ निकालेगा, जैसे ऑक्स, ऑन, ऑफ। और इसी तरीके से ओ अगर हमारे पास दरमियान में आए तो वो आ की आवाज़ निकालेगा, जैसे पॉट, टॉप, सो। और ओ अगर हमारे पास आखिरी में आए तो वो वाव की आवाज़ निकालेगा, जैसे गो, नो, ईगो। अब अगर यू अगर हमारे पास शुरू में आए तो वो आ की आवाज़ निकालता है, जैसे अप, अस, अर्न। और अगर यू हमारे पास दरमियान में आए तो वो ज़बर की आवाज़ निकालेगा, जैसे गन, बस, सन। और अगर यू हमारे पास आखिरी में आए तो वो यू की आवाज़ निकालेगा, जैसे मेन्यू, यू, फ्लो, मेन्यू, यू, फ्लो। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास वोवेल्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंसोनेंट्स का कैसे इस्तेमाल होता है बाकी लफ्ज़ों के साथ मिलकर, तो वो सब साउंड्स हम जानेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।